वाह यार, आदर और नेविल काफी अलग लग रहे क्या है, एक एक मुस्लिम एक कर्ली बाल हो गया ना। हैं। कौन बट कौन लग देखो, रहा है वही पता नहीं। अभी जो जो जितना फनी होगा उसके ऊपर अपन डिपेंड करेंगे अच्छा। किसको। सॉरी, आई विल डू माय बेस्ट नेविल शाह इंप्रेशन। हम्म। मैं भी वीगन हो गया हूं तो आदर मलिक और मैं। अरे नहीं क्या नहीं, मैं बात है। नहीं हुआ वीगन, बट आज के लिए हो गया हूं, अभी के लिए। But जस्ट बट फॉर। boys, thank you for coming. First time in the history of TIS, we have 50% TIS only. Like Oh. this is like ship of Theseus. Like if you take out 50% of TIS and you add 50 non-TIS, is it still TIS? oh, Very nice. I Very nice. genuinely, Thakur, I'm amazed that you know this reference. या। Bitch, Arey, it's a हम लोग Bollywood movie. Of course, he knows the Oh. reference. You think it's the philosophy that he's talking about here? He knows because it's produced by Kiran Rao. But also, but Azim, you have moved to Goa and immediately there is a guitar on your wall. Yeah, yeah. I stole it from a guy who was playing downstairs. Like you just like at this point you are Azim Castellino. Yeah, yeah. I'm starting a restaurant outside. We call it Souza ब्रो, Banatwala. तूने तूने अभी BMW छोड़ के एक्टिवा? Yes. No, Yeah, see that. not even Activa, dude. I am electric cycle. Oh wow. Activa का भी Wow. पार्किंग नहीं मिलता है आजकल. इलेक्ट्रिक साइकिल में यूलू। नहीं वो मैं I'm not having to work at Zomato yet. मतलब इतना भी करियर नहीं खराब चल रहा है. But it's like what that Hero Electro thing. It's got the pedals, Oh, gears, and it's got the pedal boost. It's quite oh nice. man, that's crazy. I was सुपर। और Yes. दुधेजा, वेलकम ah फर्स्ट टाइम ऑन टिस। कैसा है yes. भाई? Bye. एक्चुअली इसके डेट्स नहीं मिलते भाई दुधेजा के। Yeah. दिस इज द 9th अटेम्प्ट एंड आफ्टर दैट Uh, वी हैव गॉट। क्या कर रहे हैं like इतना that's बिजी? not because of like I'm busy or anything, yeah, because I have to fucking do writing projects, which are like fucking work in the day. Where even in fact Varun and I were going to do one last year, which got यस, this गॉट did शेल्फ। not happen. Yeah. So yeah, so that's the only reason. So I'm hoping that this podcast gives me enough followers to be like, okay, fuck off writing jobs. I'm only अरे क्या बात है, बट तू भी तो पॉडकास्ट कर रहा है ना आजकल? हाँ, मैं Oh, पॉडकास्ट भी कर yes. रहा हूँ गाइस। यस, द क्रिकेट्स पॉडकास्ट, प्लीज फॉलो। इट्स ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। मैं और शामिक चक्रवर्ती, वी जस्ट टॉक अबाउट क्रिकेट। एक्चुअली वी टॉक अबाउट एनीथिंग, बस क्रिकेट के नाम कुछ भी बात कर लेते Yeah. हैं। Shamik, आजिम, for तू those of शोज you कर who रहा are है क्या? not, yeah, for those of you who are not aware, Shamik is known in the Indian comedy scene as my stunt double. कि अगर मैं कहीं नहीं पहुंच पाता है तो ऐसा शामिक को भेज देते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा. वो भी इंग्लिश में बात करता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा लंबा है, लंबा है. Yes, लंबा है। है, yes. We have the इंजीनियर। two identifying features. Both of us do not fit on stage at J Spot. That is how you can recognize us. But yeah, just been working on my news panel show, Fake News, which will have released probably by the time that you do this. And this month, very excited that finally, after long last, my stand-up special will be releasing. ओह, Still finalizing on the platforms, but I can tell you that confirmed it is releasing on YouTube under membership. It is releasing on Vimeo for people to watch, and unironically, and I'm not making this up, it is releasing on OnlyFans. What? ओह, सच? Ah, Yeah, why not? Because they are offering the best economic model. I was like, dude, comedy छोड़ो, porn चालू करो अभी. क्या है ये? वाओ। this is, तो by the Wow. ओनली way, फैंस, ओनली फैंस वर्जन में तू स्पेशल नंगा कर रहा है कि कपड़े पहना है? Remains to be seen. No further comment. Once I have your money, you'll find out. but this is the exact career trajectory of anybody who starts on Yeah, YouTube. and dude, you think I'm going to stop at just putting it on OnlyFans? I'll follow the proper marketing template, which is that I will release a short video on Pornhub to promote and say full video on OnlyFans at the end. I can imagine a Twitter thread also coming of Azim's like photos. Bro, All for Twitter is more. full of porn. Yeah, it's I only I fans. think Twitter has not become X, it's become triple X because there is only porn, bro. Yeah. कहाँ Elon पे मिल रहा Musk, है? I मतलब mean, हाँ। not to be Atul Khatri, but send links. Bro, Elon Musk. I'll tell you when the links came. We were doing a show in Bombay और वो दिन फ्लडिंग हो रहा था बॉम्बे में। तो कौतो केस चेकिंग ऑन ट्विटर टू सी कि कितना कहाँ ट्रैफिक ये क्या है। तो द लिंक ऑफ फ्लड्स के बाद जो थ्रेड आता है ना, इट इज हाँ. ओनली पॉर्न। Bro, इट इज Bro, one जस्ट second. पॉर्न। I that's a want to bunch of know. people saying I'm wet.
Another flood was happening after that. No, I mean just the anarchist who has decided कि मैं ये डालूंगा पर under the hashtag Mumbai Rains. Mumbai Rains. That's all it was. But Yeah. सही है, चलो. Hello and welcome to another episode of the Internet Set. So, a show where we take random instant weird absurd facts that develop us stories and we talk about it. And today we have Azim and Dudeja, and we are going to be discussing weird news. Taking भाई off पहले from what ये we were क्या just था, ये talking about. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट मार्केट रिस्क कैसा हो गया Bro, सडनली? देखो, Clearly, तेरे को- this is Dudeja's first rodeo. 232 एपिसोड के बाद तो आया. तो सीन ये था कि जब भी हम लोगों ने शुरू किया, कुछ था नहीं कि क्या है. हम लोग बैठ गए फर्स्ट हाँ. एपिसोड पे, हम लोग कैमरा के सामने बैठ गए 4 लोग, और हाँ इस शो इज इंटरनेट सेट, सो ये वो, और कर रहे बकचोदी. फिर एज एवरी एपिसोड वेंट बाय वे लाइक अच्छा कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए. तो क्या क्या हुआ पिछले एपिसोड में? अच्छा फैक्ट्स बोला है तो फैक्ट्स, अरे हाँ. ट्रिविया बोला है तो ट्रिविया, अरे हमारे पर्सनल स्टोरीज बोल रहे तो लिटरली वी जस्ट पुट ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन ऑर्डर. And every episode, I would just say it, and it came to a point where it just automatically became this mutual fund type thing. Because if you ask me to do it slowly, I won't be able to do it. Oh shit. मैं इसको यही स्पीड पे कर सकता हूँ, और कितने बार बड़ा हो जाता है, बट हाँ. अभी This आके is, ये you हो know, गया है. Thakur has become the server at a Udupi restaurant, basically. वो Yeah. धीरे धीरे नहीं बोल सकता अभी हाँ. straight. Just stop me when you're done. Yeah. Yeah. जो अच्छा लगे. But Dudeja, another thing that you should know about the podcast, एक तो अजीम हम लोग का ऑनरी मेंबर है. ये हाँ. I think he comes more than बाबा. But हमारा एक और ऑनरी मेंबर है, और वो है सलमान खान. ठीक है Okay. भाई. हाँ, सलमान भाई हैज बिकम एन अनऑफिशियल 5th मेंबर ऑफ द पॉडकास्ट. तो Okay. पिछले 232 एपिसोड में हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, स्टोरी वोरी, कहाँ ना कहाँ से देयर इज अ कनेक्शन टू सलमान. सो नाउ वी Okay. जस्ट ऑनर हिम कि भाई का कुछ भी आया तो भाई के बारे में बात करेंगे. तो Done. ऑल्दो दिस इज नॉट वियर्ड न्यूज, इट इज स्टिल वियर्ड न्यूज, इट्स स्टिल न्यूज. हाँ. And by virtue of what it is, it's weird. And that is, सलमान खान का तुम लोग ने नया एक म्यूजिक वीडियो देखा क्या? एक गाना है, a song is out I by have been Salman forced to watch it. called You Are Mine. हाँ. Now I'm sure most people have seen it, but for those of you who haven't, here is little context. There is a new video. It's a music video on Salman Khan's channel. You can see where Bhai is singing You Are Mine. That's the name of the song. हाँ. Featuring some random guy who started coming and rapping. So I was like, this is really odd. ये कौन है? Then on further inspection, turns out he is his nephew. I think he's Atul Agnihotri's son, who's a rapper. Wait, तो but ये तो why is Atul Agnihotri's son, like, what is the connection to Bhai? because I think he's married to Alvira, who's Salman's younger sister. What? Yeah. Wait, Yeah. Alvira is how many siblings are Wait, there? how many? Yeah, this. Who What is is that? the Two Alvira? sisters, 3 brothers. Two Oh, sisters, three dude, brothers. dude, Okay. they keep revealing one new sister every 3 years. Yeah, fuck is this? I've never got a handle on the entire, like, the Like लोग extended Bhai gender universe. reveal ये सब करते हैं. People come out of the closet. यहाँ पे one sibling comes out of a new closet. I like how मैं भी है 50 साल से यार. सलीम जावेद के परिवार से साजिद खान को हटा दिया और सलीम में एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया अब. So One second. basically, yeah, Alvira is Salman's sister. She is married to Atul Agnihotri, जो 90s का एक्टर था ना, Atul Agnihotri. Oh. Now they have 2 kids. I think 1 boy, 1 girl. I think this guy is the boy. तो ये भाई है रैपर. तो उसने जाके बोल दिया है कि मामू मुझे बनाना है म्यूजिक वीडियो. तो मामू ने बोल दिया पनवेल आ जा. ठीक है. बिकॉज तू अगर वीडियो देखेगा ना, इट लुक्स लाइक जो पहले सलमान में लॉकडाउन में रैंडमली भाई वीडियो निकालता था, म्यूजिक वीडियो. भाई मैंने उसका एक वीडियो है भाई का, क्या बोलते हैं मियां भाई. एक मिनट पहले दुदेशा ने जब भी रिस्पॉन्ड किया ना, अरे मैंने उनका मैं बोला अभी पता नहीं तुम लोग का क्या चल रहा है यहाँ पे, रिस्पेक्ट वाला पता चला भाई ने इतना दिया है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अब. He's given so much to this podcast. उनका भाई का एक वीडियो निकला था, क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई. वो मैंने वीडियो कम से कम 3 लाख बार अकेले देखा है.
वो जितना वो वीडियो ने किया है ना देश के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, उतना पॉलिटिशियन नहीं कर पाए है। No, but the thing is, Bhai रमजान has में been राम, दिवाली में अली, मैसेज यही पहुंचाना है हमको गली गली। दैट्स राइट। hard lyrics. But the thing is, I feel like Bhai has been trying to become a singer for a long time. Like it's not Yeah. his, like he's been slowly building up to this Yeah. to this It's point. actually surrogate marketing for Being Human clothes, because all of them have like Being Human clothes. So it's basically, so in this video, Bhai is singing and then there's one guy rapping. Yeah. Yeah. So technically both of them have a rap sheet. And by the way, profound lyrics, okay? Because जो रैपर है वो आके जन 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 वो टिपिकल अपना बादशाह लाइट कर रहा है, ठीक है? और उधर भाई बोल रहे यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन. But I love how, if you watch it, the way Salman Khan sings, like he's doing his own mimicry. No, like he's caricaturizing himself with how Yeah. he's singing the song. It's insane. It's like, yo, baby, come on. It's wild. I have one story, like, I used to work on Big Boss at some point, not Oh, directly wow. for Big Boss, but for Woot on something, and I had to watch like Big Boss essentially. मैं पहली बार देखा लाइव काम किया, तो उसमें I used to watch वो वीकेंड का वार जहाँ पे सलमान used to come, and it was very clear that he's reading off a teleprompter. So he used to come and he used to be like, हर साल हम आते हैं बिग बॉस के घर लोनावला। I'm like, अरे भाई क्या लाइक लोनावला होता है भाई, लाइक ज्यादा सिलेबल आ गए यहाँ पर लोनावला। इसलिए उन्होंने गोरेगांव शिफ्ट किया था, लाइक भाई बॉम्बे आ गए वापस, इतने सिलेबल नहीं है उसमें। Yeah. But even on अपना पॉडकास्ट, I think 5th or 6th एपिसोड उन्होंने बिग बॉस पे किया था, जिसपे we found this exact thing where सलमान का एक सेंटेंस जो होता है ना, उसमें 56 कट होते हैं ब्रो, हाँ 56 कट. तो उसमें हाय मैं यहाँ हूँ वीकेंड का वॉर, हाँ तो वो ऐसे वो टप 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 वो हाँ। स्टॉप मोशन होता है ना वैसे. एंड इट्स एज सिंपल एज सेंटेंस एज कैन बी. मैंने लाइव feel देखा like- है वो, मैंने लाइव होते हुए देखा है, और तुम लोग को ये नहीं पता नीचे कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भी है। कोल्ड ड्रिंक But I Stop feel like motion यहाँ पे होता है, गाड़ी में नहीं. I feel like Bhai's editors will really benefit from AI. कि भाई बस एक सैंपल दे दो और बाकी हम लोग Dude, हम that's कर what they're देंगे. going to call it. They call it BHAI. It's Bhai only. बट क्रेजी but ब्रो, वो- सब लोग पीरियोडिकली उसके पास जाते रहते हैं. उसके नेफ्यू, पहले उसके 2 भाई गए कि भाई थोड़ा काम, फिर उसके कोई ये गया थोड़ा काम, फिर कोई लूलिया फूलिया बाहर से आते हैं भाई थोड़ा सूरज काम. पंचोली भी सबको सब 1 by 1 सब लोग पहले जिम में जाते हैं, ठीक है भाई के भाई उनको वर्कआउट कराता है, फिर उनको पनवेल लेके जाता है, फिर या तो उनको म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है या तो उनको डेब्यू करा देता है एक्टिंग में. ये यही चल रहा है. इनफैक्ट हिज सिस्टर वाज अ स्टाइलिस्ट आल्सो. अलवीरा वाज स्टाइलिस्ट आल्सो. yeah, You know yeah. that? I just looked it up. She's won the Stardust Award for Best Costume Design for the film Sultan, the one film where Salman didn't wear clothes at all. भाई का लंगोट का स्टाइलिंग. उसमें पहलवान था ना, पहलवान कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग. But like it's truly amazing, like the extended Bhai universe that exists. Like I thought it was just like the brothers, but there's more. Like it just keeps. Yeah, Like, it's I like didn't- it's a spin-off. No, so you have the brothers who are the original Avengers, and then you have the Guardians of the Galaxy apartments. Wow. Sahi. Never gets So, old. Never gets old. Please go to music video and do check out and add 1 more million views. But he's only got 1 million views so far, which is quite shocking. 4 days, 1 million views. Yeah, less I mean, for. he's not even doing India's Got Latent numbers. Come on. I I can feel like- imagine Bhai's fans going and watching the video because पूरा टाइम भाई कैमरा में देखे बोल रहा है you are mine, you are mine. तो देखे भाई, thank you भाई, yes, I believe it भाई, I am yours.
But But yeah, you know, shall we? since we are talking about actors, I saw another news piece which is about another very famous actor in the country and one of his movies that we'll all remember. So this one viewer has sent a letter of complaint to Sony Max. Okay. Can you guess the reason why? Suryavansham is off air. Yeah. No, 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 okay. the Correct. opposite, the Suryavansham exact is the opposite. opposite. He said he has sent a complaint letter saying, कितने बार दिखाओगे सूर्यवंशम? पूरा टाइम आते रहता है, वही आते रहता है. आई वॉच्ड इट टू, इट्स गिविंग मी मेंटल एगनी नाउ. मैंने इतने बार देख लिया, मुझे मूवी के बारे में सब पता है. मेरे पूरे फैमिली को मूवी Bro, के बारे में सब. at this point, they should change the name of the channel to Suryavansham Max. Bro, but you know, this used to be a joke, right? We used to make it as a Yeah. joke. अरे तू सूर्यवंश सेट मैक्स लगा तो सूर्यवंशम, स्टार गोल्ड लगाएगा तो बॉर्डर, मालूम है ना, वो एक टिपिकल आते रहते थे. बट किसी ने जाके कंप्लेन लेटर डाल दिया है, bro. बट ये आदमी को मतलब आई हैव टू क्वेश्चन द साइकोलॉजी ऑफ दिस मैन कि उसको किसी ने बताया नहीं है क्या उसका रिमोट कंट्रोल पे चैनल चेंज होता है. This is the real life version He of. thinks that this is all of TV is just this channel. Like they are only showing 3 movies. That's all that has ever been made in the history of cinema. This is like an Instagram comment on a comedian's like post. हंसना था क्या? Like आगे बढ़ जा क्या है? देखना था क्या? He's like, he has also raised concerns about the impact of the movie on people's mental health. What? And that got me, क्या था भाई सूर्यवंशम में इतना कि लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है पिक्चर देख के. अब कौन ये रिसर्च कर रहा है? जेएनयू में कोई बच्चा बेटा पीएचडी कर रहा है. सूर्यवंशम उसकी थीसिस है. Dude, the thing that I can't like figure out is this, right? Suryavansham as a movie came and went, and if it wasn't for Sony Max behaving like Maratha Mandir, we would not be talking about this movie today. Like they've just through repetition, brute force. It was one of Amitabh's lowest point in his own career. Like he was bankrupt. I think that's why they watch it. They're like Lal Bajpayee Suryavansham. करेक्ट. और वो टाइम पे उसका सब पूरा लोन्स में थे अमित जी, और फिर कोई काम नहीं दे रहे, then he had to do like movies he would not normally do. Thakur, do you movie think में he is father and son both. do you think he played both the roles because he would get extra money? और it could be the producers are like, एक मिनट देख, अमित जी is down and out, अभी हम उनको वसूल कर सकते हैं, हम इनसे 2 पार्ट करेंगे, एक का पैसा देंगे. तो अमित जी उधर एक साइड से बाप, एक साइड से बेटा. I think it would be more interesting if they had cast somebody else as the Baap. Okay. And Amit ji very like, sheepishly goes like, sir, मेरा एक suggestion था. कि अगर मैं कर लूं अपने बाप का रोल तो. And then he tells the producer, sir, 2 minute, बस 2 minute बैठिए मैं आ रहा हूँ. Goes into one room, puts on one beard. अरे बेटा, अरे अमित जी कहाँ गए? अरे मैं अमित जी. अरे I couldn't tell the difference, sir. You do the father's role. That's why Amitabh is 80 now and he's still working. क्योंकि घर पे वो सूर्यवंशम चालू होती है, like भाई I can't go broke again. I gotta keep working. You think? I think अमित जी पे सोनी कि भाई दिखाते रहना. Don't let me get complacent. अगर मैं देख लिया कि मैं कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है बार-बार, नहीं, I'm doing well. No, you show me my lowest point, it'll keep pushing me. That's why he got 2 houses also. If you don't take me at my Suryavansham, you don't deserve that my pa. Dude, but that's the thing, right? He has played his own father and then he has played the son to his own son. Because son nobody wanted to cast, no. Actual son. तेरा मैं बोल रहा हूँ अभिषेक, नहीं सर, नहीं. अरे काम करो, मेरा रियल भाई अपना बेटा. और तभी तो डीएजिंग भी नहीं था. इट वाज लेफ्ट कि ऑडियंस समझ जाएगी, ठीक है, 60 साल के अमित जी 80 साल के भी है और 40 साल के भी है. Suspension of मैं कल की देख रहा था एंड देयर इज Bro. सीजीआई अमित जी. यार नकली अमित जी, पर बहुत गंदा था वो वाला. Oh shit. It was all over the place. But अगर anyway, तू कल की देख रहा था तो टेक्निकली तू परसों की देख रहा था. Dude, like you're talking about products that people don't like. Here is something nobody thought would ever happen. I don't know if you can see it.
ये दिख रहा है, ठीक है, ये एक झाड़ू है और झाड़ू के पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स प्रिंट होके आए हैं, उसमें हाँ। दिखा है कि इसमें सोडियम है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल 0 है लेकिन झाड़ू में, ठीक है, नाइस। ट्रांस फैट भी 0 है, देखो प्रोटीन 1 ग्राम, झाड़ू खाओ घर पे। 1 ग्राम प्रोटीन है, और अगर तूने खा ली झाड़ू ये फॉर वॉट एवर रीजन तो 150 कैलोरी है। अरे प्रॉपर अच्छा क्या हाई फाइबर डाइट है ये। But this is, हाँ। you know what you know who I think wrote this? This is a kid who has written it. क्योंकि वो घर पे झाड़ू खाता है, चप्पल खाता है. You know Very what I'm nice. saying? Spoke like a true father. It's like, Indian parents were pulled up. Listen, you can't be hitting your kids. And they're like, no, it's good for them. What do you mean it's good for them? See? And then they showed. इसमें लिखा है 150 Zero कैलोरी trans है, 1 ग्राम fats. प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और इज इट मोर ऑफ अ सजेशन कि जब तू झाड़ू मार रहा है घर का तो इतना तेरा बर्न होना चाहिए 150? वो भी हो सकता है। बहुत ज्यादा बर्न होता है, बहुत ज्यादा बर्न होता है. Oof. Nuts. Okay, I want to take you now to UP. Okay. No, I don't want to go. I don't want to go. By the way, Yeah, why are we? we'll be going to UP a lot, okay, in the course of this episode. So So, the are you first aware time, of the new UP content laws? Yeah. No, I don't know. Please tell me. Please tell me. yeah, I'm before like, we proceed, Yeah. Oh, by 8 the लाख way, so रुपए मिलेगा। I'll tell you the positives of it, na, which is that Okay. you can make up to 2 to 8 lakhs as an influencer now in UP, depending on following, if Oh. you are willing to promote government schemes. yeah. oh. Yeah. Okay, so I guess we're not going to make this money because so basically this first story, okay, takes us to UP where this is a real case that was happening. The case is not funny. What happens after that is, so there was a serial killer in UP. There's a genuine, like, a lot of There are people many. were dead. Believable. Eventually the cops caught one guy, okay, and they released a photograph and they released a sketch of the criminal. Okay, now one guy on Twitter saw the sketch and the picture, and then he's like, "Ek second, this sketch looks exactly like the picture." It looks like somebody saw the picture and drew the sketch, not not putting out the sketch first, catching the guy, and then having a picture. Okay, and it's true, क्योंकि in the picture, right, this guy has one crease over here on his t-shirt. वो sketch में भी वो crease है. Make Like, sure- they couldn't even like do the scam correctly. Like the sketch artist had one job. देख ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है? हाँ सर, to the fucking T. अभी मार खाने वाला है, bro. So मार खाने वाला है. they asked the cops to clarify कि, bro, how is it that your sketch is from the future? So the cop said, no, you don't understand. We caught this guy, then we made a sketch of him, and then we were showing the sketch to people to verify whether it's him. So someone asked them, but why didn't you just show a picture? So basically, we don't know whether now the cops have actually caught the serial killer or they've just caught a guy and like sketched him into the crime. Yeah. I think Dude, lesson I is wouldn't that put it whenever. past. Sorry, you go ahead. No, I think the lesson over here is that when you are hiring a sketch artist as a police department, find the one with the least artistic integrity. Yeah. Wow. Okay, so next we go to Surat. Okay, where in Surat, this is, by the way, what a story this is. What a beautiful story. Are you ready for this? So the headline is this. Headline says, World's Best Fart Championship held in Surat falls flat after participants failed to pass wind. Oh no. Wow. Okay. Wow. So basically, here's what had happened. So in Surat, they held this World's Best Fart Championship. 60 people registered. Okay. Out of the 60 people who registered, 20 people showed up. Out of the 20 people who showed up, only 3 wanted to actually go up on stage and do it. Okay. So the organizer was very disappointed with this. He's like, we had planned so many events. We had
He had planned. What was the planned other what? event? I'll tell you. He had planned different categories such as longest fart, loudest fart, most musical fart. Wow. Wow. This was held in a banquet hall. Okay, in Oh, in a close The space. close area. Now here's the thing. Okay, if you think that, chal, people came to participate, but ये देखने कौन आएगा? I'm here to tell you, 70 people. Shut up. Wow. Bro, lesser people are coming for open mics in Bombay. इससे कम वो वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अहमदाबाद में 70. So just given up playing cricket. Like, Joe Root, go. बट ये मोस्ट म्यूजिकल पार्ट क्या है? मेरे को समझना कि क्या ये पहले ये पार्ट वॉइस के लेबल लगा रहे हैं वहां पे टू कैप्चर द साउंड लाइक Yeah. टू And are they saying कि ये वाला मोहम्मद रफी के आवाज में? आवाज में. See, you know what? If it was burp, now I can understand because you can actually, I can Induce. burp a letter, I can burp a sentence. I'm not proud of it, I kind of am, but I can. ठीक है, you can fake burp, but पादने में वो करना is actually, if you think about it, talent. कि अगर तू अपने फार्ट का वॉइस मॉड्यूलेट करके उसको म्यूजिकल बना रहा है तो क्या and बात है? farting at will. Like At will. ये, how is that possible? No, I think with the amount of omelette restaurants that are there in Surat, at this Yeah. point, and the All the amount milk of bars. cheese they are putting on top of that. Yeah. That has less protein than the jadu. Like, Dude, That is don't one give them, gram don't give them ideas. अभी सूरत में वो राजू omelette, चालू कर. झाड़ू omelette. 1 second. dude, I went to Surat, I had that omelette and like I was like कि they're like आपको नॉनवेज खिलाते हैं and I was like 10 ग्राम प्रोटीन खाए और 200 किलो चीज और घी और बटर मिक्स करके. So here's the thing, by the way, this you have to give it up to the organizer of this event because this guy doesn't know when to quit. So he has said after the failure in Surat, we have decided we're going to hold it now in Mumbai. Oh, No, but I feel like this guy doesn't understand. If you really want to hold this competition, it has to be on a SpiceJet airline. क्योंकि Yeah. उधर जो निकलता है ना, Nothing induces fart faster than airline food. तो तू Yeah. उधर कर और बॉम्बे में पादने का टाइम नहीं है भाई लोगों के पास. तू किधर कंपटीशन रख रहा है? पिछले बार 70 आए थे बॉम्बे में, कितने आने वाले हैं इसके पास? there's But कुछ तो होता है SpiceJet ना. 6 a.m. You have to pick Yes. that particular flight as a yes. early morning. कपा नूडल्स वाले like. Kappa noodles. Who is having kappa noodles at 6 a.m.? I still don't know. You would be surprised. Yeah. Yeah, जिसका मटर is like through and through like non biodegradable मटर. वो नकली लगते हैं भाई, नकली लगते हैं. उसके अंदर जो भी और जो सब्जी है उसके वो dark मटर है ये. But sorry, the last thing while we're on this topic, there's another news story which says woman farts during surgery causing laser to catch fire. Fire, bro. Bro, I saw this, my mind. So basically, she was on and she was getting some surgery. इसमें laser use होता है, ठीक है? So she has ended up farting. अभी for what reason you never know. खाना हो सकता है, दवाई हो सकती है, जो भी normal है ना. And वो laser के साथ interact होके it flammable हो गया वो. तो जल, she's actually gotten burnt. Oh fuck. Okay, so So then when people are like, this sounds ridiculous, how does that happen? So then the hospital had to come and clarify that we had used the right, no flammable things were used. ये वो, nobody assumed कि अगर operation करते अबे ये event लाना चाहिए सूरत वाले को. She is the winner. Fart pyrotechnics. without participating. Certainly. और इनके winner है वो जो हॉस्पिटल में जिसने आग लगाई. मिथेन Mithane Chakrabarti. Mithane Chakrabarti. That is fart mimicry. That's what I want to see. Oh, fuck. Okay. We are back. We are back, friends from Surat. We've taken a flight back. Shit. SpiceJet 6 a.m. 6 a.m. Back to UP. Oh my God. Right now, this is
this is just if you had to define irony, if you looked it up in the dictionary, you would find this news article inside. तो इसमें क्या होता है कि there were cops out on a bulldozer drive, okay, demolishing illegal Like you do. structures. Yes. And then the cops were The- surprised when the bulldozer landed up at the police station. Oh, oh shit. This is full Uno reverse. India is not for beginners or advanced. इधर ब्रो, हम लोग के पास इतने हम लोग को न्यूज स्टोरीज मिले ना, जैसे बिहार और यूपी में चीजें चोरी हो रही है, तो देखो क्या लगेगा, अरे घर पे चोरी हो गई, पैसे, गहने, गाड़ी, टीवी। इधर पब्लिक ने, हम इन द लास्ट फ्यू वियर्ड न्यूज एपिसोड्स दैट वी हैड, उन लोग ने टीवी टावर, ठीक है, लेक पानी का लेक, Bridge. ये Bridge. कैसे हो सकता है? हाँ, It has been And discussed. it has been At great discussed. length. Watch previous episode, but I think the robbers saw this and they said, यार जब भी हम चोरी करते हैं, इन लोग टेस्ट वियर्ड न्यूज पे बात करते हैं उसके बारे में। वो पेश है उनकी एक और की गई चोरी, पूना से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन गायब। What? Not the railway track. Wait, so how much of the train? The entire train? ट्रेन What, गायब। people inside? The train, वो खाली था या कुछ तो था। अच्छा, This is This is a PC Sarkar in MH Bihar. 370 land edition है ये। क्या है ये? ट्रेन हुई गायब, bro. So I came across this Instagram page, okay, Weird News India, where they basically literally have screenshots of different newspapers from, और सबके ना, तू हेडलाइन सुनेगा ना तो पागल हो जाएगा, ठीक है। ये देख, पहला हेडलाइन, पतला था शरीर, लड़कियों का दिल चुराने के लिए पहनता था 4 से 5 टी-शर्ट। So this skinny guy was not getting any luck with the ladies. So he realized, people told him, you're very skinny. तो वो झूठ बोल के 5 शर्ट पहनता था। फिर finally he started going out with the girl who broke up with him because she realized that when they were getting close, He's like, he अरे just unraveling like a fucking onion. अरे कहाँ हो आप? अरे बस थोड़े और। this is like such a complete, like, you know how men struggle with getting the brass strap off. She's like, अरे इसका शर्ट ही नहीं निकल रहा है मेरे से, समझ में नहीं आ रहा। Every time I take it off, it's still there. Bro, this is, you know, those जो TikTok पे वो कपड़े बदलने वाले TikTok वाले। इसका गेट रेडी विथ मी 1.5 घंटे का एपिसोड, गेट रेडी विथ मी। सर 4 दिन हो गए सर, आप क्या अभी तक पहनते जा रहे No, हो? and the thing is, she removes 7 t-shirts and then there are 4 banyan inside. This is just a very, this is PC Sarkar gone wrong. Yeah. एक्सीडेंटल मैजिशियन। बट यू नो, प्यार के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बहुत कुछ चीजें लोग करते हैं पाकिस्तान में भी। सो हुआ ये, दिस गर्ल वाज आस्क्ड, she got married to this guy, that why did you get married, you know, to this guy? So she said, she was recounting their life together, you know, when they were dating. उसने बोला, मैंने एक दिन उसको बोला था शॉर्मा लाने, मुझे भूख लगी थी, मैंने उनको शॉर्मा लाने बोला था। वो मेरे दोस्त थे, they weren't dating, मेरे दोस्त थे, लेकिन वो शॉर्मा के साथ मेरे लिए 2 जिंगर बर्गर। अरे ये बलून कहाँ से आ गए? ये iOS पे होता है भाई, कुछ तो ऐसे किया है ना, अपने आप कुछ आने लग जाता है। But it is worth a balloon moment. Balloon moment, bro. So she's now married to him and she's happy because she's like, that is what made me realize that Yeah. he is going to take care of me, कि unsolicited, बिना पूछे 2 जिंगर बर्गर ले मेरे लिए That's शॉर्मा के now साथ। new meaning to finger licking good. yeah, I'm loving him. नहीं, वो McDonald's है, sorry. वो shawarma ला रहा है, ये shawarma रही है, like it's just man. I have a Yes, interesting Sanders मौलवी बन गए हैं suddenly. Kern Al Sanders. Al Kern Sanders. This was a fun story which I had read, which is that, okay, so there's a couple, there's a businessman and his wife in Bangalore, ठीक है। तो ये लोग ने कहीं तो रास्ते पे एक, like, you know, भिखारी, beggar, whatever they saw, and they were like, fuck, this guy looks exactly like the guy. So they were like, कि beggar and guy look
exactly like each other. What? So they hatched a scheme where they tried to kill the lookalike and pass him off God. as the original guy, fake this guy's death to get the insurance money. Bro. Which for me There's is just three of like them. first of all, I think there has to have been a movie about this, no, this identity Yes. theft type, Yes. surely. If there isn't one, Abbas Mastan are yeah. writing as they are watching this episode कि भाई ये तो मस्त है. So they are Hamra basically So wait, I'll get into the exact details. Basically, there was a beggar at some traffic signal they had seen. And That's they actually killed him and they tried to make it look like an accident. Oh, Yeah. I think they apparently lured him by trying to make him like help them change a flat tire or something like that. And then, like, I don't know, ran over him or whatever. They tried to make it look like he's been run over by a car, then tried to steal the body. I don't know what they've done. They must have then tried to change the clothes and make him look like this guy has been run over or whatever. But just how do you not think this through? Ki tera agar, like, if you succeed also with all of this, Mano, you will have a funeral, people in the housing society, everybody will be there, oh, so sad, ye mar gaya, ye wo. And then suddenly 3 months later, one lookalike comes and starts living with her again. They'll also be like, ye kafi type hai ye aurat ka. She goes for one kind of guy. this is one of my exact three kind of childhood like fears unlocked because of Abbas Mastan. मेरे को बचपन से डर था. मैंने अब तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदा. I'm like कोई मार डालेगा मुझे. No health insurance. Then this is exactly what's happening. Like insurance मत लेना, कोई मारेगा. But dude, that's so crazy. You know, so shows what all can happen if you actually pay attention at a traffic signal. Right? Usually हम लोग ऐसे मुंह उधर उधर कर लेते ना कि नहीं नहीं जाओ, नहीं बात करना है. Imagine it's not like they come by that signal every day. एक बार उसने देखा, वही मोमेंट में इसने कितने मर्डर मिस्ट्रीज देखे होंगे. सोच कि ये इधर बैठा है, उसने ये भिखारी को देखा है, उसने इमेजिन कर लिया भाई हम लोग दोनों सेम दिखते हैं, अगर हम लोग इसको, ये सब उसने वो मोमेंट में He's done the entire सोच Mark लिया. मैं हूँ तेजा, sorry, तेजा मैं हूँ Mark इधर है. Imagine like one on the other side, they're seeing how to get rich on someone selling as a book, psychology of money, and on the right is this guy, and they're like, oh. And the secret actually is that before getting rich, you have to cosplay as dead poor. Dead poor. Then you can become rich again. But also, I feel like the dynamic of the husband and wife, na, who brought it up first? Exactly. Did the Because wife husband, bring it yeah, up? because it would be very like you. If you're self-aware enough, you would not volunteer कि अरे यार fuck वो भिखारी एकदम मेरे जैसा दिखता है. It has to be the wife to be like fuck तेरे जैसा दिखता है. Yeah, don't you feel? You think the wife does, you know, तो ये आपकी तरह दिखता है तो मैं आपको मार दूंगी एंड मेरे पैसा एंड देन आई कैन लिव विद हिम. क्या बोला तुमने? नहीं हम इसको मार देंगे और फिर नहीं तुमने कुछ और बोला. तुमने बोला मुझे मार दोगे, फिर पैसे ले लोगे और इसके साथ रहोगी. नहीं She Also, clearly like- has a type. They are so, ये क्या बिजनेस कर रहे हैं जो इतना खराब जा रहा है. ये प्लॉट करना पड़ रहा है. Yeah, it's bizarre. Also, I think the first time Bhikhari came to the window also, he was like, ये मेरा reflection काफी realistic लिख रहा है मुझे. Oh, crazy. Oh wow. Okay, Okay. so we have we now take a flight back Oh to no. Gujarat. So very, very bad for global warming this entire Yeah. show. More than Taylor Swift. तो एक वीडियो निकला है, ठीक है, वडोदरा से. Oh no. So basically the video is this. Okay, I'll just read out the headline first and I'll tell you what the video is. मगरमच्छ को 2 युवकों ने स्कूटर पर वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया. The video is What? exactly what it says on the headline. There is a scooter. There are 2 boys on the scooter, and the guy at the back is holding a crocodile. And the crocodile is trying to bite him. He's like, This is उसका this मुंह is से Bal मैं देखा नहीं हूँ. Narendra 2 script. Where he did I a also motherfucker. imagine they're getting pulled over by the policeman saying, ये तेरा मगरमच्छ helmet नहीं पहना है. Sachin has come on the side. Eh, motherfucker. put helmet on मगरमच्छ.
फिर साइड में कोई सचिन का ऑटोग्राफ मांग रहा है. Dude, so the thing is, they have sellotaped the Magarmach's mouth, okay, and they've taken him My to the God. Van Vibhag daftar. So here's what I feel. Wow. Here's what I feel happened. Okay, their locality was infested with Magarmach. Okay, poor people have called up the Van Vibhag and they said, please, there is Magarmach. Please, can you do something? Van Vibhag is like, how can we believe you? Oh. गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल. No, you know what I think has happened? I think what has happened is that one friend looked at the other friend and was like, bro, ये मगरमच्छ एकदम तेरे जैसा दिखता है. इसको मार के insurance money. Wow, bro. When you said Van Vibhag, I was confused. I thought the Magarmach is injured. वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ये helpful citizen जाके Could be that. उसको help कर रहे हैं. Could be that. अच्छा, That also, हाँ. yeah. Could be that also. हम लोग ये जो इतने फ्लाइट्स ले रहे हैं एक दूसरे का सिटी स्टेट वेट जा रहे हैं, राइट? पाकिस्तान में पता है क्या हो रहा है? एक वीडियो international. आया है ब्रो, एक वीडियो आया है वेयर द प्लेन हैज लैंडेड, ओके, इन पाकिस्तान, एंड बिफोर टेक ऑफ द पायलट ने विंडो खोल के वो खुद बाहर जाके विंड स्क्रीन साफ कर रहा है ब्रो अपनी. Not even fucking वॉचमैन का Not हॉलिडे even fucking kidding, bro. ये पायलट है. Pilot. 1 second, You Thakur. know, this Can just you- looks like they've photoshopped a Pakistan in there just to make Pakistan look bad. Yeah, possible. No, but this is on NDTV, so Okay. yeah, still possible. But can But Pakistan is crazy. There was this one video of they have a Jurassic Park theme Yeah. something. Yeah, we've covered What? this. अरे That's भाई, Punjab and that's one of my most favorite Pakistan videos. ब्रो उस पे टीरेक्स नाच रहा है बॉलीवुड म्यूजिक पे ब्रो, और Which सब लोग देख के पंजाबन अरे वाह नाच पंजाबन. That's Punjab OG, not from Jug ओजी, Jug. yeah. Wait, ओजी this नाच pilot, पंजाबन. this Bro, pilot that is was that very 1 second. classic. Why wasn't it called Jurassic Park? As in PAK. Oh. Or Pakistan. But I think this guy is one of those classic drivers who's just very, very old school. I think even while driving the plane, वो ऐसा window खोल के indicator देता रहेगा. Yeah. आ रहा है, U-turn. Bro, I you- think maybe it's their 6 a.m. Spice Jet and he's like, यार यहाँ पे competition चल रहा है क्या? स्मेल आ रही है. खिड़की खोल, खिड़की खोल. खिड़की खोल. Bro, if you catch him on a Sunday, वो बाल्टी ले गया था. वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है. But can you imagine Maybe- you've bought a ticket for this flight, you're on that aero bridge, okay, where they keep you for like Yeah. half an hour before boarding, right? Or तो ऐसे ही you're looking out to pass the time, suddenly see the window. You see this guy come. So I that's would- why you're confused. You're like, wait, is this the pilot who's doing the cleaner's job, or is it the cleaner who's doing the pilot job? Which one of this is the case? Please clarify beforehand. मर्जर हो गया है तो थोड़ा ले ऑफ हो रहे हैं तो like तो अंदर चढ़ेगा, स्टूवर्ड वेलकम नहीं कर रहे, उन लोग बेचारे बैठ के झाड़ू मार रहे हैं सर इधर सब उधर कचरा थोड़ा ऊपर से आगे से आना. भाई ये क्या चालू है इधर? हाँ सर, कपा नूडल्स खाइए. बट Noodles खाइए. Okay. बट बाय द वे तुम लोग ने एक नया स्कैम सुना है क्या? विच आई लव इट, क्योंकि हम लोग हर एपिसोड में हम लोग को कहीं ना कहीं से स्कैम्स आ ही जाते हैं, ठीक है? और दिस वाज अ स्कैम इन द न्यूज वेयर बेसिकली दिल्ली में आई थिंक देयर वाज दिस गाय, टिंडर पे ही मेट अ गर्ल, वेंट विद द गर्ल फॉर अ डेट, और उसका बिल आया है 10 लाख रुपये 10 लाख? का. Girls are making them spend money, na? this happened in Bombay Yeah. also in Andheri, some place So called then- Red Light Club. Red Light Club. Dude, so this, yeah, ऐसे कुछ तो है. Might be this about the amount, but yeah. So ये similar scam actually we had spoken about this on one of our episodes long back, ठीक है? So this was यूरोप में ये स्कैम बहुत पॉपुलर होता था, स्पेशली वेंचो देसी ट्रैवलर्स के साथ. और अगर तू सिंगल देसी गाय है खत्म. गाइस का ग्रुप, तो इनको तो मालूम है भाई इनको कैसे चुतिया बनाना है. तो स्कैम ये है कि यूरोप, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में तू जाएगा, चल अपन 4 लोग गए घूमने, ठीक है? तो तू कोई जो भी टूरिस्ट एरिया में चल रहा है, बाय डिफॉल्ट 2 हॉट लड़कियां तेरे पास चल के आएंगी, ठीक है? और आके देखो ये बताएंगे, हे डू यू नो वेयर दिस प्लेस इज. सबसे पहले हॉट लड़की, ठीक है? सेकेंडली लड़की सवाल पूछ रही, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, तो सब चौड़े हो जाते हैं, ठीक है?
फिर तू हेल्प करता है, इवन इफ यू डोंट नो, तू हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद बोलते हैं, सो आर यू गाइस डूइंग समथिंग, वी वांट ग्रैब अ ड्रिंक टुगेदर। तू वापस बोले, जो सामने से मेरे को आके पूछा है, वही। हो जे ड्रिंक, इन जाएगा सब ग्रीक गॉड्स के बीच में मुझसे आके बात की है। Yeah. तो हम्बल। फिर यूल गो फॉर अ ड्रिंक एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट नाइट तेरे को ऐसा बिल आएगा, और बिल आएगा 600 यूरो, और तू बोले 600 यूरो, मैं तो बेंचो बियर ऑन टैप पी रहा हूँ। हाँ फिर आएंगे उनके ड्रिंक्स जो है कुछ इसमें है एंजल पिस, ये बना है 78 ईयर ओल्ड से रखा हुआ, मतलब हजार ऐसा ऐसे ड्रिंक। तो सेम आजकल दे स्टार्टेड इन इंडिया, अंधेरे में हुआ है एक, उधर दिल्ली में भी हुआ है, वेर टिंडर पे पकड़े तुम लोगों को बाहर लेके जाएंगे, और फिर आएगा बड़ा वाला बिल। But स्कैम इज 10 lakh मेड at इन some इंडिया। point, if you are gone on a if you've gone on a date, at some point you look at the table and be like, थोड़ा ज्यादा हो गया है ना at this point. Like, how do you let it go up to 10 10 lakh. lakhs? Yeah, no. So at one point, no, there, it's not the quantity of drinks per se. It is the price of the drinks called. या So 10 lakh nahi, I might be wrong about the figure, but it was a Few big thousands. amount. 10,000 भी It है, takes it's still a lot for a date. That's what I'm saying. Why would you want to? And this is a random person, तू टिंडर पे पहले बार मिला है, तो फिर लौंडे वो करता नहीं यार मैं भरूंगा फर्स्ट, ऑफ कोर्स तू भर, लेकिन तू अगर तू 2 पैसे के अकेले तो एक बार पूछेगा ना, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तो बोलेगा आई एम हैविंग फलाना टाइम का, तो एक बार देख लेगा ना ऐसे मेन्यू पे कि भैंचो कितनी है, ओके ठीक है चल, वो वो तो तो एक बस होता वो जोमेटो खोल के सॉर्ट बाय प्राइस ascending to descending. ऑल्सो उसमें ये होता है कि ये मेरे को जो ये अंधेरी वाला स्कैम है उसमें लड़की निकल गई, बोला यू सो चीप यू कांट पे दिस मनी, और फिर उसको पीटा पब्लिक ने, होटल स्टाफ वालों ने कि भाई What? हाँ या ये तो भैंचो Why जले is पे hotel नमक है। staff beating him for being cheap? No, 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 they are in for on, the they are in thing. on the thing. Oh, okay, They okay. are, They're Like, all they in are, on this. they उसका are कट all है। in on this. हाँ, तो वो oh. लड़की को तो अपना कट मिल गया है by getting this guy and getting हाँ. the bill up till a certain point. The hotel is technically correct because on that table the person that is remaining has to clear the bill, which in this case is Yeah. this guy. Yeah. So Wow. तो ये नहीं, and then they will tell you, and they have big bouncers and all this. You don't want to get into You're a thing. intimidated, yeah. Yeah. तो तू दे देगा, और एक बार तूने दे दिया, then by the time you try figure this out happens, nobody is going to take you seriously. Yeah. So he और- put this online, so that spread like really far and wide. कि I भाई can also imagine अंधेरी में, हाँ, अंधेरी में भाग भी नहीं सकता है ना, so गाड़ी में बैठ के जाएगा भी किधर, पुराना पेपर, अरे शिट में ट्रैफिक में, ओके सॉरी मैं आ रहा है वापस. Also, like this is a perfect, like I think WhatsApp forward for like parents to send for like marriage. ये देखा अरेंज मैरिज में ये नहीं होता, आप घर पे मिलते हैं समोसा खाते हैं। और अरेंज मैरिज में सिर्फ लड़की के माँ बाप पैसे लेके भाग जाएंगे। तुमको कुछ नहीं होगा बेटा, अरेंज मैरिज करो। I thought तुम लोग ने, I'm sure like वो वाला scam भी cover किया होगा, but when you mentioned scam, I thought you were going to mention the DHL, the FedEx scam. ओ यस, मेरे को नया कल है। फोन आया, मेरे को कल फोन आया DHL मेरे को तो रेगुलर भाई, मेरी तो दोस्ती हो गई उनके साथ, लाइक अरे कॉल आता है कि आपके पास आपके ड्रग्स पकड़े गए, बोला MDMA, तो मैं बोला क्या, बट मैंने तो मैथ भेजा था, fuck वो क्या यार, I should रहता have है? picked up, I should have pressed the one yesterday. You So I should was- always, अच्छा by the way, you can press 8 also. And they will 8 से क्या pick up. होता है? This is Mario में will pick secret up. level. No, like I'm like कि चलो देखते हैं 8 प्रेस करके अगर ये उठा रही है, 8 प्रेस करके उठा देते फोन, फिर पुलिस भी जल्दी, इतना जल्दी, मैं एक बार पुलिस स्टेशन गया, मुझे पता है पुलिस कितनी स्लो है। I'm like पुलिस But this just shows you how close Dudeja has gotten to the scammers. कि Yeah. एक भी प्रेस कर, 8 भी प्रेस कर, अगर 7 करना तो कोई और आएगा। अरे fuck, next time I'll pick up यार. And the हाँ, thing is that दुर्गा बोल रहे हैं। once they catch on to that you are in on the scam, वो लोग तेरे को गाली देता है, fuck you, fuck गाली your गाली mother, गाली, bastard. हाँ नहीं मेरे को तो गाली ही नहीं दिया, बट मेरे को एक किसी ने बताया कि मेरे को कॉल आया, मैं बोला भाई मुझे आ चुका है ये वाला कॉल, तो वो भड़क गया जिसने उसको नंबर दिया था, क्योंकि उसने बोला भाई हम 100 रुपया देंगे पर नंबर, और साले ने मेरे 100 रुपए ले लिए, और तुझे कॉल भी आ गया, तो मतलब This हमने is स्कैमर के साथ स्कैम किए है this किसी और is स्कैमर ने। this is a documentary waiting to happen behind the scam. Bro, This is it's outside. insane.
दिस मॉर्निंग आई गॉट इट, मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो उसके लिए ना वेरिफिकेशन के लिए हाँ। आता है, ठीक है, तो मेरे को फोन किया, बोला अभी आपको लिंक आएगा, आप डॉक्टर से बात करेंगे और जब डॉक्टर से बात करें यू हैव टू बी ऑन वीडियो, तो प्लीज अपने सेटिंग्स में जाके ये सब अलाउ हाँ, कीजिए, हमें ठीक है, और आपके हाथ में फ्रंट और बैक प्रॉपर एड्रेस प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज। मैं चूतिया एक काम करना, घर पे आ जा, कितना पैसा चाहिए, मैं तेरे कैश निकाल के रखता हूँ तेरे लिए, घर पे आके ले ले चूतिए, तू नया है क्या तू, ही डिडंट गो 1 2 3, ही वेंट Yeah. 10 एंड Yeah. सीधा कि सर ये भी अलाउ कर दो, अपना डॉक्यूमेंट भी रखो, फ्रंट बैक दोनों चाहिए, ये सब चल रहा है चूतियों By में। the way, there was a news article where this lady in Bangalore, lawyer in Bangalore, fell for this, and because first they tell you all of this. Ek to, I remember taking the details the first time it happened. So the FedEx guy will be like, "I'm giving you details, and आपको पुलिस को ये details देने हैं." तो बोला आपका पार्सल थाईलैंड जा रहा है, उसमें लैपटॉप है, सिम कार्ड है, फोन है, एंड ईमेल आईडी लिख दो आदमी का। तो आदमी का ईमेल आईडी वाज CHAAYOS @Chayos. Chayos. I was like कि भाई ये क्या चल रहा है। फिर मैं बस समझ गया तब भी ये स्कैम है। Yeah. फिर पुलिस वाले से भी बात किया कि बता, उसने अपना बेल्ट नंबर वो सब बताया, फ्रॉम अंधेरी का क्राइम ब्रांच, और चूतिए आपको लोग हैं। स्काइप डाउनलोड करना है उतने पे। मैंने बोला बस यार अब बोर हो रहा है। This, But this, lady downloaded Skype yes, you're right. You're and right, she Dudeja. was on camera for 15 hours, and she couldn't, there were nudes, and also they blackmailed her more and took more money. Like it was Oh like wow, it was a big thing. Yeah. wild. By the way, संभालो भाई लोग। tell me this, okay? How do you pronounce this? Okay. The word is CHAINA. CE CHAINA. चाइना, China. बट चाय एज इन चाइना। Yeah. So there is a place in Punjab called China. Okay. CHAINA. So someone has sent a parcel to China for Gurdas Man, China, Punjab. The guy at the Chandigarh post office has taken it, seen it, and sent it to Beijing. Just arbitrarily. So now the delivery guy in Beijing is trying to find a guy called Gurdas Maan. No, there in China, there is an actual DHI guy calling, which sounds like a scam. But he's actually a guy saying कि आपका order China से आया है क्या? And गुरदास बोला हट बेंचो, मुझे चूतिया मत बना, ये स्कैम चल रहा है। नहीं नहीं सर, मैं चाइना, आपका पार्सल चाइना आना है। अबे चाइना में, अबे चाइना आना पार्सल पे। सर आप समझ रहे नहीं हो सर। बोले साला ये एक्चुअली में बहुत ड्रग्स कर रहा है यार, ये पंजाब वाला लोग। Oh fuck. Who called it airmail and not Udta Punjab? There was one I had which was a damn interesting. I don't know, most of my things end up with people getting killed. But so man, this is just the headline. Man convicted for killing friend over Uno game. Which is Wow. like you hear it, but also there is a part of you which is like, I get it. Yeah. Yeah. We've all had murderous thoughts about our friends in board games, but we just don't Specifically action. Uno, like उसने just draw to पे draw 4 डाल दिया। stabbed him as over of death. Uno, dude. Fuck. Yeah, But no, तुम this is लोग instead draw of 4 पे plus draw 4 two. allow करते हो? हाँ, तुम लोग draw 4 पे draw 4 allow करते Draw हो? 4 पे draw 4 allowed है। और फिर draw 4 पे draw 2 डाल सकता है? नहीं, because वो बहुत 2 लोग की हो वैल्यू गए। कम है ना, because draw 4 पे तो तुझे कलर भी बताना है, तो वहीं पे हाँ, मतलब that's my Oh, I logic. think Uno had Dude. clarified this before that you they can't had put. to. Yeah. And Yeah. that tweet got so much abuse. Like they tweeted अबे this out क्योंकि saying, सबका अलग है ना, खुद का वर्जन है ना सबका, कि हम लोग इस पे तो अलाउड है, हम लोग draw 2 पे फिर 1 भी डाल सकते हैं। ये कैसे? except this guy who he doesn't play draw 2, he plays -1. Where No, he reduces players. he plays draw knife. वो draw 4 पे he draws blood, bro, from you. Color changes to red. It's just insane. And just if you just and these Where are is things that this? Where did this happen? Mumbai, dude. Mumbai. Oh my God. Yeah, yeah. And just if you pull out and look at these crimes at a macro level, it's just you have to then look at the fact that
At some point, families are going to explain to people ki kya hua, what are the circumstances. The guy who is going to jail for this crime is going to explain to people. And also the poor policeman who's writing the FIR is going to have all these कि क्या हुआ, अच्छा उसके पास एक कार्ड था, वो उन्होंने नहीं बोला, पर वो एक्चुअली बोला कि मैं सॉफ्टली बोला था, तुम लोग सुना नहीं, फिर उसको मार डाला. इसलिए बोलते हैं रमी खेलने का, रमी सिंपल है रे, उसमें कुछ Download Jummy Rummy. Great ad actually. And the worst is like ये जेल में शायद पत्ते खेलते होंगे. जो जेल गया ना, it might do great for his reputation because he walks in, people are like भाई इससे ये डेंजर आदमी है, इसके ड्रॉ 4 पे तूने ड्रॉ 2 डाल दिया तो ये मार देता है. अरे क्या बात कर रहा है. उसके साथ 3 पत्ती खेलना से, ठीक है. कंचे कंचे खेलो, no पत्ता. No, I wonder if this guy just has a problem with all board games. He's just a board game serial killer. he takes it very seriously. He plays Monopoly, go to jail 6 times again. Okay, I'm going. अरे नहीं भाई, बोर्ड गेम पे जाना तो तुम रियल लाइफ में चलेंगे. आया हूँ तो किसी को लेके जा रहा हूँ. And there was one more, which was, this was another one. This was insane. This was, hold on. Mumbai Society chairman bites off member's thumb. Oh fuck. What? Okay, and I have to read this out, and I found this. I mean, the story was funny because the name of the guy is Aditya Desai, and I'm just thinking of our Aditya Desai. So this is the thing: a heated argument broke out between the guy, the secretary, and the society member Aditya Desai. It turned into a scuffle when the guy allegedly bit off Desai's left thumb. Okay, and this is the explanation he's saying. In the meeting, I gave an application to the chairman when he was rude and pushed me. I fell down when he sat on my chest and broke my spectacles. During a bid to save myself, my thumb slipped into his mouth and he bit it off. Oh, Is the secretary of this building a fucking lion or something? इतना easily कैसे? हाँ. And also just the thing of I fell down when he sat on my chest. This you've missed one very giant detail. How did we reach the sitting on chest part? What Rikishi Fatu moves is he putting? मैं AGM में जाता नहीं हूँ, but I feel I should go. Bro, except in this case, सूट पहन के जाना. In this case, this is annual general body parts meeting. Just आप अपने secretary meeting में जा रहे हो तो बस I advise कि gloves पहन के जाना. पता नहीं क्या हो सकता है. Wear helmet at AGM too. Can you imagine reading? Sachin joins the meeting. Yeah, please wear helmet. Can you imagine reading the minutes of this meeting? Like it starts with, decided proposal on new parking arrangement. Decided on how to clean up society. And then third point, scuffle broke out. Thumb went into mouth. Accidentally went into his mouth and he has bitten it off. Accidentally मुंह में जाने के बाद gag reflex नहीं है, his first reflex खा जाता हूँ. And then at the end of the list it says vote of thanks. But I don't agree to this meeting because I can't sign because I don't have a thumb anymore. So can't give thumb impression also. But like I just feel bad for the cops, bro, who have to sit taking down all of these complaints. Right? Like, अरे साला अभी उनो वाला गया था, तुम लोग अभी थंब वाले के साथ आए हो. हमारे बिल्डिंग में क्या चल रहा है? जाने तो टेरेस पे बच्चों को, चले गए, उंगली काटने का जरूरत नहीं है. I think now that all this is happening in Bombay, I think the fart competition might be a good thing. Good idea. Just Like, break the tension a little bit, I think. Bro, इधर पुलिस को क्या क्या रैंडम चीजों के लिए बुलाते हैं. एक और न्यूज पीस है, अगेन फ्रॉम द इंटीरियर समवेयर. इट सेज 36 घंटे सेक्स करने के बाद थके हुए पति ने बुलाया पुलिस को, छुड़ाई जान. 36 घंटे 36 घंटे सेक्स करने के बाद, यू नो हाउ देयर, ये देखना, 36 घंटे सेक्स करने के बाद बुलाया पुलिस को, छुड़ाई जान. And nahi santusht is the best part. nahi santusht. Listen, if you are not able to create one orgasm after 36 hours of trying, then you need to work on your technique. You need to. 36 घंटे, bro. Fuck.
Bro, meaning और पुलिस आके बोले कंप्लेन रजिस्टर किसके लिए करने का 36 घंटा तो अच्छा तू 36 घंटा करते चुके ये लोग सोए नहीं है 24 Very- hours से ज्यादा ट्राई करते करते. This is a movie in which James Franco is going to be cast, I think, at some point. मैंने 36 आवर वाटर फास्ट के बारे में सुना था. ये 36 hours non-stop sex. Wow. but Non- मैं भी Also- फर्स्ट पार्ट सुन के बहुत एक्साइटेड था. हम लाइक भाई 36 आवर्स तो कंबाइन नहीं हो पाया आज तक. but 1 second, for him to call the cops, okay, it means ki not only has she said ki like we are not finished until I'm finished, okay, but she's also shut the door, she's locked him up like like he's hostage at this. And cops have come with handcuffs and she like, yeah, give them to me. And मेरे पास पहले से ही है. कॉप्स लाइक छड़ी, मेरे पास छड़ी भी है. मास्क है सर, मेरे पास वो भी है. एक्चुअली आप मेरे पास कॉप का आउटफिट भी है, आप क्यों आ गए? then eventually he makes her role play as a cop. अरे सिर्फ and then she's like, हाँ अभी मजा आया. Alright, भाई ठीक है. Imagine he's also calling the cop. Cop is like, देख भाई, आज मेरे दिन में एक थम और एक ऊनो हुआ है. अभी मैं नहीं आ सकता है. तुम कर सेक्स अभी गार्ड मत. तेरे भाई सेक्स करते रहे. ओह वाओ. और कुछ है? I think I also need to leave. So if we can wrap. है एक कौतुक तेरे पास एक लास्ट है. We'll just wrap this up. Okay, last one is this one, okay. We've taken a flight back. Oh We no. landed again in UP. One last Arey. time. All right. So here's what happened. So there was a health center, okay, in UP. And in this health center, there was a freezer which they used to keep vaccine in. But Okay. when they opened the freezer alongside the vaccine, they also found cans of beer. Oh, Oh. ये बट इसलिए कोविड से लोग ठीक नहीं हो रहे. बोल रहे भाई हम लोगों ने तो 3-4 ले लिया वैक्सीन. थोड़ा कड़वा था टेस्ट में. ये वैक्सीन का नाम हेवर्ड्स 5000 क्यों है? मेरा कोविड नहीं जा रहा लेकिन मैं बिना देखे ना डार्ट बोर्ड पे डार्ट फेंक सकता हूँ. Very nice. Hayward 5000 or Hayward 2000. And if you're too young, please go online and see the ad. Yes, that is 2000 is the first one, 5000 is booster shot, and third dose is even black. you lose your all senses, like. Smell, It does taste, not. It's not feeling. Hayward 5000. It's Hayward 10,000. Have you guys had ever Hayward? हाँ yeah, bro. Dude, Yeah. it's The potent. first I ever had. मैंने डार्ट फेंका ब्रो किसी के आंख में गया. तो फिर मैंने बोला That's when after that happened, they started putting in all ads. Please do not attempt at home. My mom is at the back. घर पे तो पति मारो डांट. So yeah, I've never had it. I want to like try Hayward 5000. अभी तो मिलता भी नहीं होगा शायद. नहीं मिलता है. नहीं But that's मिलता है, damn good. certain Like, मिलता है. but do you मैंने think they actually खजुराहो somebody? भी है. खजुराहो. खजुराहो जाते हैं क्या बोलते हैं? खजुराहो बियर वेदी एक है. उसमें भी बहुत बुरे हाल हो जाते हैं. उसमें क्या? उसमें उसमें हम लोग 36 घंटा सेक्स. Having sex on a wall also. I think that's. we're content at wall too. चलो और कुछ है कि करें समाप्त ये वाला एपिसोड. Done. ना बहुत ही मजेदार एपिसोड बॉयज. तुम लोग कुछ प्रमोट करना है अपने नए शोज वोज तो बता Yes, दो अभी. please. I have no live shows currently. I will be touring in late 2024, early 2025, and I will have a special out at some time this month. As I said, YouTube, Vimeo, and OnlyFans. तो मेरा OnlyFans का मैं link डालेगा OnlyFans का description में. First ever comedian to give OnlyFans link non-ironically. Now the good thing is I'm going to take an OnlyFans account of someone else. And because our CA is the same and be like, अरे वो अजीम का special अजीम का देख रहा था." स्पेशल देख रहा था. Why do you think I'm doing this? This is for the community, so that all of you can watch porn and blame it on me, guys. Yeah. It's a selfless act for which I'm charging only $8. And suddenly wives and girlfriends are asking, अच्छा अजीम का एक जोक बता. And you're like, वो तो नहीं, वो नहीं दे. एक बार अजीम पिज्जा डिलीवर करने आया था. उसका best punchline was yes, oh my god, yes.
You like it? Yes. Chalo. And yeah, just before we go, guys, thank you so much for watching this week's episode. We'll see you again next week. All the links to our shows, memberships, merch, everything is down below. Azim का OnlyFans भी, crickets भी डालेंगे हम लोग नीचे. Yes. जिसमें 100%. जल्दी आने वाला है. मैंने उससे पूछा नहीं है, Rajesh. अभी बोल दिया है. अभी मैं बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं. Alright, done. है ना? मस्त. Okay, guys, thank you so much for watching. Make sure you like, share, subscribe, comment, थोड़ा engagement करो और उसके बाद शादी भी करो. And we'll see you again next week. Until then, is goodbye. Take care. Tada. Salamesh. Guys, अपने को तो लगता है ये permanent बनाना चाहिए. But in fairness, Dudeja, they say this to me every time. But we say seriously, bro. तू seriously लेता नहीं है. अभी बोल, अभी निकाल दे. अरे मैं आएगा, मेरे को क्या है? Hello, बाबा. हाँ, बाबा, you're out. बाबा, you're out. पर Hello, पर edit कर देना. You're out. पर edit तू ही करेगा, बाबा. Podcast करके ना करे.